शे एकमुखे हनुमत्कवचं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्री हनुमते नमः। एकदा सुखमासेनं शङ्करं लोकशङ्करं पप्रच्छ गिरिजाकान्तं कर्पूराधवलं शिवं। पार्वत्योवाच भगवन् देवदेवेश लोकनाथ जगद्गुरो शोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेद्ध्रुवम्। संग्रामे संकटे घोरे भूतप्रेतादिके भये दुःखदावाग्निसन्तप्त चेतसां दुःखभागिनाम्। ईश्वर उवाच शृणुदेवे प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया विभीषणाय रामेण प्रेम्णा दत्तं च यत्पुरा कवचं कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः गुह्यं ते सम्प्रवक्ष्यामि विशेषात् शृणु सुन्दरे। ओम अस्य श्री हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषेः अनुष्टुप छन्दः। श्री महावीरो हनुमान देवता मारुतात्मज इति बीजम्। ओम अंजना सूनुरिति शक्तिः। ओम ह्रैं ह्रां ह्रां इते कवचं स्वाहा इते कीलकं लक्ष्मण प्राणदाता इति बीजं मम सकल कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ न्यासः। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनेभ्यां नमः। ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम अंजनासूनवे हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुसुतात्मने शिखायै वषट्। ओम वज्रदेहाय कवचाय हुम्। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम हुं फट् स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ओम ध्यायेत् बालदिवाकरधृतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्त वानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मञ्जीयज्ञोपवीतारुणरुचिरशिखा शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं
वेदनादप्रमोदं ध्यायेत् देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदे भूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धकर्मकुशलं पारावारपराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशस्य करखण्डनम् उद्यद्दक्षिणदूर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्ते द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वय संशोभे मुखाम्बोजं हरिं भजेत् उद्यदातिथ्यसङ्काश मुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा यो वारां निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्यर्चित राक्षसेश्वर महादर्पापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवोऽवतु सदा युष्मान् च मेरात्मजः वज्राङ्गं पिङ्गकेशं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगर्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नं त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि उद्यल्लाङ्गूलकेशप्रलयजलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपद्मभ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नं वज्राङ्गं वज्ररूपं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगर्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोदिनाथं वामे करे वैरिभयं वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्नं ददानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलरामदूतं पद्मारागमणे कुण्डलत्विषा पाटले कृतकपोलमण्डलं दिव्या गेहकदले वनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद् राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजोः रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरकृतार्थः स्वं परं मन्यमानः वन्दे विद्युद्वलयसुभग स्वर्णयज्ञोपवीतं कर्णाद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डले धारयन्तम् उच्चैर्हृष्यद्युमणिकिरण श्रेणिसम्भाविताङ्गं सत्कौपीनं कपिवरवृतं कामरूपं कपीन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सततं स्मरामि श्रीरामदूतं सततं स्मरामि श्रीरामदूतं सततं स्मरामि। ॐ नमो भगवते हृदयाय नमः।
ॐ आञ्जनेयाय शिरसे स्वाहा ॐ रुद्रमूर्तये शिखायै वषट् ॐ रामदूताय कवचाय हुं ॐ हनुमते नेत्रत्रयाय वषट् ॐ अग्निगर्भाय अस्त्राय फट् ॐ नमो भगवते अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ आञ्जनेयाय तर्जनीभ्यां नमः ॐ रुद्रमूर्तये मध्यमाभ्यां नमः ॐ वायुसूनवे अनामिकाभ्यां नमः ॐ हनुमते कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ अग्निगर्भाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रां ह्रः ॐ ह्रीं ह्रां ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारे महामारे भैरव यक्ष वेताल राक्षस ग्रह राक्षसादिकं क्षणेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजन मुखस्तम्भनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठं 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 फट् स्वाहा मुखस्तम्भनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठः 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 फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते अंजनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय रणोच्चाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय स्वाहा ॐ नमो हनुमते सर्वग्रहानुभूत भविष्यद्वर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकाल दुष्ट दुर्बुद्धिनुच्चाटयोच्चाटय परबलानि क्षोभय क्षोभय मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् देहि ॐ शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां स्वाहा ॐ नमो हनुमते परकृतान् तंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्वविघ्न दुर्जन चेटक विदान सर्वग्रहान् निवारय निवारय वद वद पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाचं फट् स्वाहा ॐ नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषं दुष्टानां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय
ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डलं प्रेतमण्डलं पिशाचमण्डलं निराशय निराशय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर विषमज्वर माहेश्वरज्वरान् छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि अक्षिशूल वक्षशूल शरोभ्यन्तरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषं नाशय नाशय निर्विषं कुरु कुरु फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिं षण्ढदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर फट् स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्यं पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामब्धिपारगः उदिच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावने अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्यो निरन्तरं सुग्रीवा सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारे च पातु न प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रे अञ्जनासूनुर्वक्त्रं पातु हरेश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टाश्चिबुकं दत्य प्राणहृत् ओष्टं रामप्रियः पातु चिबुकं दत्य कोटिहृत् पातु कर्णं च दैत्यारे स्कन्दौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारे च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पत्वा नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः सिक्किणी च शिवप्रियः ऊरू च जानुने पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महावीरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचाक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दते त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपून् क्षणे जित्वा स पुमांश्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम् आर्किवारे श्वत्थमूले स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारयन्नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे
भूतप्रेता महादुर्गे रणे सागर संप्लवे दशवारं पठेद्रात्रौ मिताहारे जितेन्द्रिय विजयं लभते लोके मानवेषु नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्रयातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे कायस्तम्भे वह्निदाहे गात्ररोगे च दारुणे शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने सर्वदा तु पठेन्नित्यं जयमाप्नोत्य संशयं भूर्जे वा वचने रक्ते क्षौमे वा तालपत्रके त्रिगन्धे नाथ वामस्या लिखित्वा धारयेन्नरः पञ्चसप्तत्रिलोहैर्वा गोपितं कवचं शुभं गले कट्यां बाहुमूले वा कर्णे शिरसि धारितं सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितं सत्यं श्रीराम भाषितं सत्यं श्रीराम भाषितं उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॐ हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनचकः पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव चेताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचन्द्र कथित पंचमुखे एकमुखे हनुमत् कवचम्